जो दवाओं का इंडिया में रेगुलेटरी सिस्टम है, इट्स गवर्न्ड बाय अ लॉ कॉल्ड द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अब आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि बाबा रामदेव की कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, ये भी इंक्लूडेड होते हैं। इसमें एक प्रोविज़न है कि मिस ब्रांडिंग ऑफ ड्रग्स अगर है तो वो ऑफेंस है। मिस ब्रांडिंग ऑफ ड्रग्स में एक ऑफेंस का इंग्रेडिएंट ये है कि अगर आप दवा के बारे में कोई मिसलीडिंग क्लेम करें, कोई फॉल्स क्लेम करें, तो दैट इज़ अ मिस ब्रांडिंग ऑफ द ड्रग। तो ये जो स्टॉक्स हैं दे आर लायबल फॉर कन्फिस्केशन, और जो कंपनी चलाने वाले हैं दे आर ऑल्सो लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। दूसरा है, देखिए कि अगर ये ड्रग मार्केट में आ गई, लोगों ने इस्तेमाल किया, अगर किसी का नुकसान हो गया, किसी की कोई क्षति पहुंच गई, किसी को कोई और हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, गॉड फॉरबिड किसी की मौत हो गई, तो फिर जो ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं दे विल ऑल्सो बी लायबल अंडर जनरल क्रिमिनल लॉ फॉर द हार्म दैट हैज़ बीन कॉज्ड। मतलब कि किसी ने अगर दवा खा ली, मुझे पता नहीं दवा में क्या है, क्या पता कुछ और कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए किडनी लिवर को, मुझे पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कॉजिंग ऑफ हर्ट का भी केस बन सकता है। किसी की जान चली गई जैसे मैंने कहा, तो उसमें कल्पेबल होमिसाइड का भी केस हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ये संगीन चीज़ें हैं। कोई भी दवा अगर मार्केट में आती है तो पूरा लेड डाउन प्रोसीजर एक है जिसके तहत उसको अप्रूवल मिलता है। ये किसी के कहने पे, किसी कंपनी के मनचाहे आइडिया पे कि भाई देखिए हमने ये दवा बना ली है और अब हम दवा बेचेंगे और ये आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसे तो आज तक किसी भी कंट्री में कोई भी दवा बाहर नहीं लाई गई। ऐसे तो क्वैकरी बढ़ती है, ऐसे डेंजर और बढ़ता है। और आजकल के माहौल में आप सोच सकते हैं लोग इतने डेस्परेट हैं कि कोरोना वायरस कोविड के लिए कोई इलाज मिल जाए तो जो कोई भी हमसे वादा करेगा कि भाई इससे देखिए कुछ मदद मिलती है, तो वो तो चीज़ बिकेगी, वो चीज़ बिकेगी तो कंपनी को फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन जो लोगों के हेल्थ पे नुकसान हो सकता है उसकी भरपाई कौन करेगा। तो लीगली तो देखिए ये बहुत ही क्वेश्चनेबल चीज़ है। बाकी चीज़ें जो कि इन्होंने ख़बरों में आ रहा है कि इन्होंने कुछ गलत क्लेम दिया एट द टाइम ऑफ टेकिंग परमिशंस, कोई चीज़ छोड़ दी, कोविड का मेंशन नहीं किया, दोज आर ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफेंसेस इन देमसेल्व्स, उनकी पेनल्टी होती है। बट सिंपली सेलिंग अ मिस ब्रांडेड ड्रग, और दूसरा कि ऐसे कोई ड्रग जिसका कोई और साइड इफ़ेक्ट हो जाए या उससे किसी को कुछ क्षति पहुंच जाए क्योंकि उसकी सीधे ठीक तरह से क्लिनिकल टेस्टिंग नहीं हुई है, तो ये तो बिल्कुल लॉ के अंदर इट्स लायबल फॉर एक्शन एंड लायबल फॉर क्रिमिनल एक्शन। The news of Baba Ramdev claiming that he's come up with a medicine for coronavirus situation and the response of the Ayush Ministry to it is extremely surprising and perplexing to me. It's one thing to say for the Ayush Ministry that we haven't given permission to Baba Ramdev to sell his medicines just yet, but we all know that Baba Ramdev has a huge following. So when a person of Baba Ramdev's stature and with his following goes on to claim that he has found something and says that he has evidence for it without actually producing that evidence, to my mind, it is a fraud committed, against the people of India at large. Speaking of laws, there are clear laws in India which can be invoked against Baba Ramdev by Ayush Ministry and by the government. For example, in the year 2008, the Drugs and Cosmetics Act was amended and there were some severe penalties brought in for anybody selling spurious drugs. Now, spurious drugs basically broadly can be said to be any drug which says or claims to do one thing but doesn't do that. Beyond these pharmaceutical acts, there are also ample provisions in the Indian Penal Code. For example, we have the entire chapter 14 of IPC, which says, of offences affecting the public health, safety, convenience, decency, and morals. And there are several sections within Chapter 14 of Indian Penal Code which can be probably, applied in this case. For example, Section 269 talks about negligent act which is likely to spread infection of disease dangerous to life. Section 276 is about sale of drug as a different drug. And all of these are criminal offences which provide for punishment up to a minimum of 6 months. So why is the government
government going soft in case of Baba Ramdev, by just taking a hands-off approach without actually going directly against Baba Ramdev for making a claim as serious as having found, a solution to coronavirus is extremely disturbing a trend. Is it because he's close to power and his proximity of power is what explains the government's response? Well, that is anybody's wonder. But in a country like ours, where recently we have seen the government going very sternly against several journalists, even booking them under the UAPA Act, letting go of Baba Ramdev, for making as bold a claim as that, is setting up a very, very dangerous precedent. So I think it is time. We know that we are waiting for Ayush Ministry's exhaustive response to this situation, but it is. I think it is very clear that Ayush Ministry will have to take a stern action against Baba Ramdev than just saying no permission given to him to sell these medicines, because the word goes around, right? And there are several people in India who are uneducated. They may not know of this specific notification. Even if the Ayush Ministry were to come up with something like that, disallowing Baba Ramdev to sell off the medicine, I think when somebody like Baba Ramdev, who's also considered to be this yoga guru and has a huge following in India, when he does something like this, I think the government needs to send out a very clear signal to people. If it is not backed by evidence, which clearly, nothing has come up in the public domain yet for Baba Ramdev to show that he had acquired the requisite permission. So I think there needs to be a much more stern action against Baba Ramdev for making a claim like this. Also to act as a deterrent against anybody else doing something similar, because it's clearly playing with the lives of people. It's clearly indicating them, that the medicines that Baba Ramdev is selling will do one thing. And especially in India, we know, in several states and cities, the infrastructure, the health infrastructure is crumbling down. People are finding it very hard to get themselves checked. And for a situation like that, for somebody to claim that this medicine can solve all their problems is clearly against the laws, and it is clearly a fraud on public. So I think the police and the Ayush Ministry should invoke the relevant sections, against him, both from the Indian Penal Code, but also from particularly the pharmaceutical laws that applies in this case. Thank you. To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.